beautiful, radiant day filled with sunshine and, of course, goodwill. It truly touches my heart to witness such an incredible gathering of compassionate people supporting this vital cause. At Bhavani Foundation, we have proudly hosted an annual blood donation camp for the last 10 years. I'm delighted to share that we are now expanding our efforts by organizing these camps twice a year, allowing us to make an even greater impact in supporting healthcare needs within our community. I'm Rajalakshmi Alate. On behalf of Bhavani Foundation, extend my heartfelt welcome to each and every one of you at the Foundation's 13th Blood Donation Camp. Thank you for being here, and your presence and generosity truly makes a difference. Founded in 2014 by Mr. K.D. Shetty, the Foundation was inspired by a real-life crisis. One of the staff members at Bhavani Group met with an accident and urgently needed blood. The Bhavani family, the employees and the associates of Bhavani Group came together and donated blood, successfully saving that life. This act of collective compassion deeply moved Mr. Shetty, prompting him to establish the foundation to create broader societal change. Since its inception, the foundation has built strong partnerships with major blood banks and hospitals in the Navi Mumbai and Mumbai, including Tata Memorial Hospital, Apollo Hospitals, NMMC Hospital Blood Bank, MGM Hospital Blood Bank, and Sanjeevani Blood Bank. These collaborations have enabled regular blood donation camps to support patients with conditions like thalassemia, cancer, and other emergencies. This initiative reflects a strong commitment to healthcare access, community welfare, and turning a personal moment of need into ongoing life-saving efforts. It's a great example of one urgent situation can spark sustained positive change. I would now like to invite our President, Mr. K.D. Shetty, and Trustee, Mr. Jigshit Shetty, to join our esteemed Chief Guest, Dr. Nitish Jawar, along with our guest of honors, Sri Hari Shingavleji, Srimati Uma Ahuja ji, Sri Satya Babu Naidu ji on dais. Also request our Honorable Secretary, Ms. Shikha Shetty, Mrs. Sarita Shetty, and Treasurer, Mr. Naveen Shetty, to join us on the stage. As we come together in the spirit of service and unity, let us pause for a moment of reflection on the timeless wisdom. Not a single leaf stirs without his command. In every act of kindness, every drop of blood donated, and every life touched through our efforts, we recognize the divine hand guiding us. Om Shubham Karoti Kalyanam Arogyam Dana Sampata Shatru Buddhi Vinashaya Deepa Jyotir Namostute Deepa Jyotihi Parabrahma Deepa Jyotir Janardana Deepo Hastume Papam Sandhya Deepa Namostute. To humbly seek the Almighty's abundant blessings for the success of today's noble endeavor and for the well-being of all, I warmly invite our President, Chief Guest, Guest of Honors, Trustees, Committee members to kindly join us in lighting the auspicious lamp.
request our Honorable Secretary, Ms. Shikha Shetty, to welcome the gathering. Good morning, respected President. I request all to be seated and maintain the calmness, please. Thank you. Good morning, respected President, trustees, committee members, guests of the occasion, doctors, donors, volunteers, and my dear colleague. It is an honor to welcome the man whose dream and dedication brought all of us here, our founder president, Shri K.D. Shetty. This event is the living testimony of his extraordinary guidance. On behalf of Bhavani Foundation, it gives me immense pleasure to welcome you all to this 13th blood donation camp. Your presence here today not only reflects your generosity, but also a true sense of social responsibility. Blood donation is one of the noblest acts of humanity. A single unit of blood can save multiple lives. And each donor present here today is silently becoming a hero for someone whom they may never see, but whose heart they will definitely touch. In times of medical emergencies, blood has no substitute, but voluntary donors like us form the backbone of our healthcare system. It is my honor to welcome one of the elite members of society, Dr. Nitesh Jawar. He is the Senior General Laparoscopic, Robotic and Laser Surgeon with more than 25 years of experience. On behalf of Bhavani Foundation, we would like to welcome you as chief guest for this noble event, sir. It is my pleasure to welcome our guest of honor, Shri Harish Ingvaleji, a responsible voice for Ward 22, focused on local issues, transparent governance, citizen-first development. And also, as a mechanical engineer himself, he has put in lot of efforts towards the upliftment of society. We welcome you, sir. I would also like to welcome Srimati Uma Ahuja as guest of honor for this noble event. She is the founder president of Smiles Foundation, an NGO dedicated to child education, women empowerment and welfare. Now, I would like to welcome our next guest of honor, Shri Satyababu Naidu. He is the founder and managing director of NextGen Infratech Solutions LLP, one of the successful and respected conglomerate in Navi Mumbai. Thank you for being part of this event, sir. I would like to express my sincere gratitude and welcome the medical team of MGM Hospital's Blood Bank and their supporting staff for their dedication and professionalism. It reflects that this camp will definitely happen in a very smooth and safely manner. Most importantly, I would like to welcome our wonderful, ever energetic and supportive team of Bhavani Group, who are the pillars of this initiative. I would like to welcome our media partners, Mr. Naveen Inna from Karnataka Malla, Mr. Subhash Shiriya from Udayavani, Mr. Karunakar from Shambhavi Enterprise, Mr. Pranit from Z Savistas, Mr. Sahil from Rashtra Maharashtra News, Mr. Ganga Singh Raj Purohit, EW Network, Mr. Purushottam Kanojia from Awaaz Today, Mr. Sahil from Navi Mumbai Network. This camp is not just an event. It is a reminder for all of us that we all together can make a meaningful difference in society. So let us all join together in creating awareness about the regular blood donation and inspire others to come forward for this noble cause. Once again, I warmly welcome you all and thank you for your valuable time and selfless contribution. I hope this event happens in a very successful way and I wish a good health to everyone present here. Thank you.
It was very wonderful and very motivational welcome speech. Thank you so much. Bhavani Foundation carries out various activities ever since inception in 2014. We now invite Ms. Kritika Gharat from the Bhavani Group on the stage. She will provide a brief yet insightful introduction of Bhavani Foundation and its impactful activities over the years. Over to you. Good morning, everyone. I'm Kritika Gharat. I've been associated with Bhavani Group, and today I feel privileged to share with you the inspiring journey of Bhavani Foundation, the CSR wing of Bhavani Group, which was established on March 14, 2014. Bhavani Group is an organization Bhavani Group is a voluntary organization committed to the welfare of the society. हम सबका एक ही गोल है, मदद करना बिना किसी भेदभाव के, without any distinction of race, caste or nationality. Over the years, Bhavani Foundation had carried out many meaningful activities. I would like to name few of them. In 2015, a health checkup camp was organized in Mangalore, where over 1,000 people were treated, 10 patients received cataract surgeries, and over 100 plus were given spectacles. For the past 10 years, we have been consistently organizing the blood donation camp. एक छोटी सी कोशिश किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए. The foundation had also supported many meaningful activities, like by helping students like Dr. Sia Shetty and Ms. Diya Shetty. We also provide monthly support to 50 plus widows for their children's education. In addition, we provide medical assistance to cancer and trauma patients, renovate schools in Maharashtra and Karnataka, and donate computers, school buses, uniform and educational kits. Not only this, but आदिवासी communities के लिए भी काफ़ी कुछ किया गया है, like building Samaj Bhavan in Firkatwadi and supporting schools in Raigad. During the pandemic, the foundation extended their help to everyone, including medical aids, groceries, food distribution, and even support to the transgender community. Bhavani Foundation believes in unity, respect, and working together to solve the community problems. And today, on the occasion of this blood donation camp, I would like to say, Raktadaan is Jeevandan aahe. Let us all come forward and contribute, cause even one donation can save a life. I would like to end with a beautiful thought. The simplest act of kindness are more powerful than 1,000 heads bowing for prayer. Thank you all. I mean, the points which you have shared about the Bhavani Foundation, it's really memory back of the activities by Bhavani Foundation since 2014. Not only that, we have adopted many schools also, including the schools in Kepu. There is a school in Ambarnath. We have the team from Ambarnath also as Nijalingappa Ambarnath School. So we have adopted many schools. We have provided all the facilities in renovating the schools, giving the uniform and educational kits. In whatever the way possible, we from Bhavani Foundation is supporting for the educational and medical cause. अतिथि देवो भव. हमारी भारतीय संस्कृति में अतिथियों का सत्कार ईश्वर पूजा के समान माना जाता है. आइए हम इन सम्मानित अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत करें, जो अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर हमारे इस पुनीत आयोजन की शोभा बढ़ाने पधारे हैं. आप सभी का हृदय से अभिनंदन. This is a blood donation camp. What more we can ask for than having Dr. Nitish as part of our event and honoring the event by being the chief guest. Dr. Nitish Jawar is a senior general, laparoscopic,
robotic and laser surgeon with over 25 years of specialized experience practicing at Apollo Hospitals, CBD Belapur in Navi Mumbai. Holding qualifications including MBBS, MS General Surgery, FMAS, FIAGES, FALS, FAC RSI, Fellowship in Advanced Laparoscopic Surgery, that is SILS, Fellowship in Colorectal Surgery from the USA, and Advanced Training in Minimally Invasive Proctology from Germany. He excels in advanced minimally invasive procedures such as robotic hernia surgery, laser treatments for piles, fissures, fistulas, pilonidal sinus, and laparoscopic gallbladder surgery. His contributions and expertise include renowned for his patient-centered approach combining cutting-edge techniques with compassion. Dr. Jawar is an international trainer for laser and stapler hemorrhoidectomy as well as hernia surgery. Active member of prestigious organizations like the Association of Surgeons of India, ASI, and currently serves as an executive committee member of the Association of Colorectal Surgeons of India, ACRSI. He has presented numerous papers, contributed chapters to medical books, led live operative workshops, and trained fellow surgeons worldwide, advancing healthcare standard. I now would request Shri K.D. Shetty, Shri Jigshit Shetty, and Shri Naveen Chandra Sanil to join us in felicitating Dr. Nitish Jawar. A big round of applause for Dr. Nitish for his contribution to the society. Keep the applauding on, please. Thank you, sir. We are honored to introduce our guest of honor, Shri Harish Ishwara Ingvaleji. Born in 1969 in Goregaon, RA Colony, Shri Harish grew up in a disciplined family with his father serving as a policeman, leading to frequent relocations during his early education and life. In 1980, his family settled in a modest home in Nerul Sector 8, where challenges fueled his larger dreams. A qualified mechanical engineer with a degree in non-conventional energy, he built a strong career spanning over 16 years in production, maintenance, and project management across reputed companies in India and abroad, rising from training engineer to general manager. This journey instilled in him core values of discipline, meticulous planning, and unwavering responsibility. In 2007, he founded High Tech Consultants and Services, an engineering and energy projects firm that today collaborates with major industries across India and Africa. His guiding business principle remains steadfast, which is deliver quality work with integrity. No shortcuts, no compromises. Driven by a deep sense of social responsibility, Shri Harish has always believed in action over the words. In 2014, he established an association to address everyday concerns of common citizens and resolve local issues effectively. He is very famous in Nerul and Ward 22 especially. During the COVID-19 pandemic, his tireless community service earned him a recognition as a COVID warrior. In 2023,
he joined the Shiv Sena Uddhav Balasaheb Thackeray team, motivated solely by a desire to enhance security, environmental protection, and quality of life for all, without seeking any personal post. Today, as head of the Nerul West Department, he continues his dedicated social work, proving himself not as a politician, but as a true problem solver who prioritizes results and execution. Sri Harish Ingavle ji exemplifies hard work, integrity, and selfless service to society. We are happy to have you with us, sir, today, and thanks for gracing this event with your presence. I would request Mr. K.D. Shetty, Mr. Mohan Rai Karnoor, and Mr. Navin Shetty to come over for honoring Sri Harish Ingavle ji. Srimati Uma Ahuja. She is the founder president of Smiles Foundation, NGO associated with child education, women empowerment and welfare. She holds a master's degree from Mumbai University, having 30 years of experience, well-read and well-traveled. She has been conferred the degree of Doctor of Humanities for Social Work by 2 universities for her dedicated and tireless service to humankind. Deeply inclined towards the ideals of equality and equity and happiness for all, Srimati Uma Ahuja has been working to empower and uplift children, youth, women, and supporting the most vulnerable and deeply affected classes of the society. She has been able to reach out to more than 5 lakhs needy families by using own personal funds to provide for the needy and bring smiles on their faces through Smiles Foundation. She has always been a crusader for women empowerment and child welfare. Keeping service above self, she has reached out to the needy across most parts of the country and supported many orphanages and senior citizen homes, juvenile homes, municipal sanitation workers, jobless auto rickshaw and taxi drivers, postal employees, Adivasi tribals, indigenous people, migrant workers, unemployed artisans, vehicle towing personnel, dabbawalas, and many more who were left jobless during the pandemic. Not only this, she has reached out to various paramilitary forces, army units, and police personnel to help their children towards education and employment. Srimati Uma Ahuja has reached out many sections of people by helping in free education of children from various paramilitary forces, army units, and police across the country, and extending support to children from Jammu, Kashmir, Leh Ladakh, Haryana, Himachal Pradesh, Delhi, Assam, Manipur, Nagaland, Mizoram, Meghalaya, the entire map we could see in front of us, madam. Thanks to you. With hearts filled with inspiration, may I now warmly invite Srimati Sarita Shetty, Srimati Priyanka Shetty, and Srimati Shika Shetty to kindly come forward and honor Srimati Uma Ahuja.
we can see the tradition is following through the younger generation as well over here. Yansh? Now we have with us Mr. Satya Babu Naidu. We all know him very closely. He is very closely associated not only with the foundation but also with the Bhavani Group. A seasoned telecom and IT professional with over 25 years of hands-on experience in technology, strategy, business development, marketing and sales. Mr. Satya Babu Naidu possesses comprehensive expertise across the telecommunications industry and ITES sectors with a deep knowledge of next generation technologies and emerging business opportunities. His career includes leadership roles at prestigious organizations such as the Tata Group, Reliance. I would request everyone to maintain silence, please. Thank you. His career includes leadership roles at prestigious organizations such as the Tata Group, Reliance, and Birla AT&T, which is Aditya Birla Telecom. In 2018, he founded Next Gen Infratech Solutions LLP, transforming it from a startup into a thriving organization with a team of over 200 highly skilled and meticulously trained professionals. Under his visionary leadership, the company has earned a strong reputation for rapid growth, uncompromising quality, and continuous innovation, establishing itself as one of the most respected and successful players in Navi Mumbai's business ecosystem. Known for his integrity, transparency, trust, and forward-thinking approach, Mr. Satya Babu oversees daily operations while driving the company's strategic vision, goals, and long-term success. Qualified with a Bachelor of Electronic and Communication Engineering from Andhra University and MBA in Marketing and International Business from SP Jain Institute of Management and Research, Mumbai, Mr. Satya Babu has done his senior leadership programs from IIM Ahmedabad. With leadership boasting more than 25 years of proven success in these domains, Next Gen Infratech Solutions LLP delivered strategic, tactical, and operational advantages to clients through reliable, time-tested methodologies and industry's best practices that drive profitability and market prominence. I would request Mr. KD Shetty, Mr. Jikshit Shetty, and Mr. Naveen Shetty to come over for honoring Sri Satya Babu Naidu ji. It was possible for us to host this blood donation camp only with the support of MGM team group of doctors, Navi Mumbai. I would request the team from MGM, the doctors, support staff along with Mr. Rajesh Atade. I request all our committee members to come over to facilitate the MGM team. MGM team to come over here, please. Join us, please. I also want to say thanks
to Barbet Events team who has organized this event so nicely, and I cannot leave the name of Mr. Gunesh, who has come forward in creating everything for Bhavani Foundation free of cost, because he wants to support this cause without collecting any money from us. Can I call them over here, please? Mr. Gunesh and Mr. Alex. Thank you so much. What an honor it is to have with us Shri Kusumoda D. Shetty ji, President of Bhavani Foundation, a gentleman of deep principles and limitless kindness. As a true philanthropist, he has opened doors for so many through job placements, wedding support, medical help, education, and beyond that. His compassionate leadership has enabled Bhavani Foundation to deliver widespread charitable work and meaningful societal support. Sir, we humbly request you to inspire the gathering with your valuable motivational words. It's now great pleasure to invite our respected chief guest, Dr. Nitish Jawar, to address the gathering and share a few words of wisdom with us. Sir, we are all eagerly awaiting to hear you. At the outset, thank you very much for having me here. My heart is full of gratitude, and that particular word, the gratitude or gratefulness, is probably the theme of this particular group. I'm highly impressed and touched the way they are doing this good work without any selfish motto. And this particular thing is what keeps them apart. I've heard that they are running this NGO without taking any external support. And this is Mr. K.D. Shetty's vision, and the way it is growing, it is amazing. I'm deeply touched. See, I'm a surgeon by profession, and I can tell you that more than us, probably nobody understands the importance of blood. In our emergency rooms, in our ORs, we have a saying that when you see somebody bleeding, you don't see blood, you hear blood. People are shouting, get blood, push blood, save this man. A young guy comes with a RTA, road traffic accident, somebody comes with a gunshot wound. That initial 1 hour, we call it golden hour, can save lives. So trust me, all of you who are sitting here and donating blood, you are doing a wonderful job. It can't be described in words. This is one thing. See, blood is one thing which you can't manufacture, right? It has to be donated. And every year, we are running short of at least 1 million units of blood than what we actually need. So there may be some people who are dying because they are not getting blood. So if we have this kind of drives, and this is amazing, and definitely this is going to help. Thank you so much for having me here. I am really impressed by the work you are doing, sir. Many congratulations, and I am honored to be here, to say the least. Thank you so much. Much, Doctor. Definitely, Doctor, as you mentioned, we all from Bhavani Foundation as a family, we will ensure that we will contribute maximum number of units of blood to the society. In a world where true service often goes unnoticed, we are fortunate today to have someone who embodies selfless dedication. I now warmly invite Mr. Harish Ingavle, a man who has devoted his life to uplifting society and serving humanity with unwavering commitment,
never aspiring for any political office or title, to grace us with a few inspiring words. Thank you, madam. Respected Dais and present here, Bhavani Group team. Your work is really impressive. What the kind of things we are doing is a real noble cause. You know, in this technology world, only things which we cannot manufacture is the blood. मी थोडं मराठीत बोलतो. आजच्या AIच्या जगात सुद्धा तुम्ही AIला विचारलं की तुमच्या प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर मिळतं, पण एका प्रश्नाचं उत्तर मिळत नाही, ते म्हणजे रक्त कसं बनवता येईल. रक्त हे रक्तदानानेच मिळणार, म्हणूनच आपल्याकडे म्हटलं जातं रक्तदान श्रेष्ठ दान. मी रक्तदान शिबिर हे बरेच भरवत असतो आणि कोविडमधला एक किस्सा मी तुम्हाला सांगतो. मी बरेच रक्तदान DY पाटील ब्लड बँक, रायगड ब्लड बँक, MGM इथल्या बऱ्याचशा यांच्या माध्यमातून बऱ्याच वेळेला नवी मुंबईत ऑर्गनाईज केलेले होते, त्यामुळे बऱ्याच जणांना माहिती होतं. लॉकडाऊनमध्ये ज्यावेळी लोक आपल्याला एक सुईसुद्धा टोचून घेऊ इच्छित नव्हते, त्यावेळी मला DY पाटील ब्लड बँकमधून फोन आला की सर आपल्याला थॅलेसेमिया पेशंटसाठी ब्लड कमी पडतं, आपल्याला रक्तदान शिबिर आयोजित करावं लागेल. मी मनातल्या मनात हसलो, ऐकलं, फोन ठेवून दिला. दुसऱ्या दिवशी परत फोन आला, सर आपण काल बोललो होतो त्याच्यावर काय पुढे होतं आहे काय. तर त्यांना मी म्हटलं ह्या लॉकडाऊनमध्ये घराच्या बाहेर कोण पडत नाही आहेत, तुम्ही लोकांना रक्तदान करायला सांगता, तुम्ही कुठल्या तरी ऑथॉरिटीजना अप्रोच करा. तर ते म्हणाले नाही आमचं सगळं झालं आहे करून, पण आता आम्हाला तुमच्याकडून अपेक्षा आहे. मला त्यावेळी क्षणभर आश्चर्य वाटलं, पण तरी पण मी त्यावेळी इग्नोर केलं. यू वोंट बिलीव्ह, नंतर मला त्यांच्याकडून एक पत्र आलं आणि ते पत्र इतकं भावनिक होतं की मला राहावलं नाही. अगदी लॉकडाऊनमध्ये म्हणजे ज्यावेळी बाहेर पडायला सगळ्यांना मनाई होती, त्यावेळी मी 3 रक्तदान शिबिर आयोजित केले एका आठवड्यामध्ये आणि 102 बॅग्स आपण त्यावेळी कलेक्ट केल्या होत्या. आणि त्यानंतर मला 14 जूनला जो रक्तदान शिबिर दिन असतो त्यावेळी मला DY पाटील ब्लड बँककडून माझा सन्मानही करण्यात आला होता. मी माझ्या वाढदिवसाला सुद्धा दरवर्षी रक्तदान शिबिरच भरवतो. मी 2023 पासून समाजकारणासाठी राजकारणात सक्रिय आहे आणि मी बाळासाहेब ठाकरे साहेबांचा पहिल्यापासून पाईक असल्यामुळे मी शिवसेना पक्षात आहे आणि त्यांच्या 23 जानेवारी ह्या जयंतीनिमित्त मी भगवा सप्ताह घेतो, त्यामध्ये सुद्धा मी एक रक्तदान शिबिर नेहमी घेत असतो. तर रक्तदानाचं हे महत्त्व आपल्या सर्वांना माहीतच आहे आणि भवानी फाउंडेशनचं आणि शेट्टी साहेबांचं हे दरवर्षी होणारं कार्य. आणि आता मी जे ऐकलं की ह्या वर्षीपासून तुम्ही आता वर्षाला 2दा करणार आहात, तर हे खूप चांगलं कार्य आहे. असंच करत राहा. तुमच्या नुसतं ह्याच नाही, सर्व कार्याला माझ्याकडून शुभेच्छा राहतील. आणि आज आम्हाला इथे बोलून जे भवानी फाउंडेशन आणि शेट्टी साहेबांनी आम्हाला सन्मानित केलं, त्याबद्दल मी त्यांचे व सर्वांचे आपले मनापासून आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you so much, sir. हमें लगता है हम sir, thank you so much to you, sir, because you identified the right people to be the guest for this today's occasion. No wonder why Mr. Harish got the title of COVID warrior. Thank you so much. Next, we have Srimati Dr. Uma Ahuja, founder and president of Smiles Foundation, whose relentless work in empowering women, educating children, and fostering community welfare has brought hope and smiles to many. And the foundation's name itself is Smiles Foundation. Ma'am, your journey of compassion is truly motivating. We eagerly look forward to your few words of wisdom and encouragement. A very good morning to the respected organizers, Bhavani Group, President Shri K.D. Shetty ji, his family, Dr. Nitish Chawar for being here, Mr. Harish Ingavle, Mr. Satyababu Naidu, all those people present here, and all the wonderful donors here. In fact, I would like to express my heartfelt gratitude and for getting me here. I was actually going through your organization website. There is something I truly noticed, and what was particularly inspiring,
about your foundation is your vision to create a lasting impact in communities through your work in healthcare, education, and women empowerment. Initiative like today's blood donation camp truly reflect this commitment. They show how collective efforts can contribute to building a healthier and educated, empowered society. I would also like to appreciate all the donors who have been present here. As everybody said, blood cannot be manufactured. And Raktadan hi Mahadan hai. And how do we save somebody's life without even spending a single penny? And that is blood donation. In fact, we don't even know who is getting that blood. So being anonymous and doing some charity is the best donation that I feel can happen. Every day hospitals require blood for so many patients, and there is a severe shortage. I'm sure we all understand that. And getting blood donated for a very good cause is really, this is what I really want, and truly appreciate that we could all come together and get this done. One thing I wanted to say is, how many of us have ever thought of donating blood? And like doctor said, that one unit can save multiple people. So that is what even like red blood cells, platelets, helping multiple patients in need. So your donated blood can become a hope for someone. And I do understand many people hesitate in donating blood. Maybe there is some reason for it, but blood donation is truly safe, and all the medical fraternity realize how carefully they can do it. But in case, and it's very hygienic and safe these days. So I don't think there should be any apprehension for donating blood. But right now, again, come to think of it, somebody somewhere is waiting for your blood. So this is a beautiful symbol of humanity. And thank you so much for making us a part of this wonderful event. Thank you, and God bless everyone. Thank you. Thank you, ma'am. In fact, your journey of compassion is truly very motivating for all of us over here. And may your tireless efforts and vision continue to touch countless lives and light up communities. Thank you so much. Now, with immense pleasure, I would like to invite Sri Satya Babu Naidu, a distinguished and successful businessman renowned for his contributions to next generation technologies, to share some insightful and positive thoughts with the gathering. Good morning all of you, and namaskaram. It is very honor for me to be here in this noble cause organized by our Bhavani Foundation. K.D. Shetty sir and his entire Bhavani group and Bhavani Foundation, whatever they do in big scale and with big heart. So I would like to request you all to give a big salute and big claps for them for this noble cause. Since inception 2016, I am part of some of the events. Bhavani Foundation, they are consistently working towards the welfare of the society in terms of education, in terms of medical support, in terms of economical aid for the kids to develop their studies and careers, and social welfare. I have witnessed a lot of programs and events along with Shetty sir, so I should salute to him. And God bless them, all of them, to do more for the society, for the welfare. Blood donation is not a medical need. Blood donation is a lifeline. So here I appreciate all the volunteers, donors, for your courage and helping the welfare. Blood donation, you're donating drops of blood. It's not only you're donating, you are giving the chance to the other person to live his life, his family happily. So I once again appeal to all of you and encourage and appreciate all the donors to give more and more whatever possible to save this
nation and save this the people, those who are really in need. So, Jai Bharat and Jai Maharashtra. Thank you so much for me here. Thank you, sir. Thank you so much. Now it's time for us to invite our founder, President Shri Kusumodar Shetty, a man with deep principles and limitless kindness. As a true philanthropist, he has opened doors for so many through job placements, wedding support, medical help, education, and much beyond. His compassionate leadership has enabled Bhavani Foundation to deliver widespread charitable work and meaningful societal support. Sir, we humbly request you to inspire the gathering with your valuable motivational words. Respected guests on the dais, particularly in your so busy schedule, spending almost 4 hours, that too leaving a hospital like Apollo Hospital just over one call from our Bhavani Group and our Bhavani Foundation, Dr. Nitish ji. It will be remembered forever. Once again, I would like to welcome you, sir. Our next respected guest, none other than Shri Harish English. Harish ji and me, of course, we are staying in a same society. But आज ज्या पद्धतीने आज हरीश साहेब आपल्या समोर इथे बसलेला आहेत, मी हरीश सरांच्या कामाबद्दल आज नाही म्हटलं तरी सुद्धा एक 7-8 वर्षापासून मी त्यांच्या काम बघतोय आणि शेवटी आज आम्ही आपल्या सर्व भवानी परिवारतर्फे त्यांना इथे यायला आई भवानीनी बोलवलेलं आहे, मी नाही बोलवलं आहे. सर, once again, thank you so much for coming here. Now, Miss Dr. Uma Ahuja ji. Anyhow, I am going to speak something about her. Always I have been telling in our organization, as on date, there is no any much difference between a male and female. Somewhere I can say male can compete little more than a man, for which Dr. Uma Ahuja ji is an example, and today, she is also over here. I would like to thank ma'am for coming over here. Another great personality, Shri Satyababu Naidu ji. नायडू जी, आपने पर्दे के बाहर रह के जब से आज 2013 से हम जुड़े हुए हैं, मगर जब भी कुछ मुझे दिक्कत हुई, दिस जेंटलमैन, ही इज़ फ्रॉम IIM अहमदाबाद, सच ए ग्रेट पर्सनालिटी, और कभी भी कोई उनके पास बड़ापन नहीं है. यू कैन कॉल हिम midnight by 12 o'clock. He is available. Such a great personality. So I would like to thank to you also, sir. तसंच आज हम यहाँ ये अपना जो भवानी फाउंडेशन है, सब लोग बोल रहे हैं शेट्टी 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 केडी शेट्टी, नाम के वास्ते. असली में जो भवानी फाउंडेशन या भवानी ग्रुप आज कड़ी है, ये सब आप लोगों के लिए, हमारे और मेरे साथ दिए ले मेरे जो ट्रस्टीज, आज हमारे
वाइस प्रेसिडेंट कारणांतर से वो यहाँ नहीं है, वो आज भगवान श्री राम का दर्शन ले रहा है अयोध्या में, पहले ही उनका वो फिक्स हुआ था। सो मैं इस मौके पे श्री धर्मपाल देवाड़ी जी के भी मैं यहाँ अभी याद करना चाहता हूँ। वैसे ही है हमारे एक्स वाइस प्रेसिडेंट श्री दिनेश शेट्टी जी। आज दिनेश शेट्टी जी एक ऐसे हस्ती है हमारे पास, हमें मीडिया के कोई ज़रूरत नहीं है। आज दिनेश शेट्टी जी के एक दाएं हाथ में पूरा मीडिया है। आज पूरे इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप में, लोकमत ग्रुप में हमारे दिनेश शेट्टी जी के नाम है, तो उनको भी मैं याद करना चाहता हूँ। वैसे ही हमारे सनील जी, नवीन चंद्र सनील जी, उसका नाम भले नवीन चंद्र सनील रहेगा बट उसका असली नाम पंडित नवीन चंद्र सनील, जिन्होंने आज 70 के ऊपर मंदिरों के पूरे एक, अगर उसका फिनिशिंग हुआ है उनके जो वास्तु के हिसाब से हुआ है, वो भी हमारे एक ट्रस्टी है। वैसे ही हमारे कर्नूर मोहन राय जी एक ऐसे हस्ती है, उसको कोई बीट नहीं कर सकता है, संगठना चातुर्य है वो। तो मैं वैसे ही मैडम केनी मैडम, एक टीचर होने के नाते हजारों बच्चों को शिक्षण देने के माध्यम से आज हम अपने इतने वक्त ना होते हुए भी आके हर एक मीटिंग, हमारे भवानी फाउंडेशन का कमेटी मीटिंग अटेंड करके बहुत अच्छा सलाह मार्गदर्शन देते हमें सपोर्ट किया है। तो ये सब लोगों से आज अगर समझो भवानी फाउंडेशन इस तरफ, हम लोग इस दिशा में हम लोग चल रहे हैं। और आज आप लोग ने सुना इस ऑर्गेनाइजेशन, इस फाउंडेशन, अगर समझो हम लोग इतने लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये सिर्फ केडी शेट्टी जी के लिए नहीं, केडी शेट्टी जी से नहीं है, हर एक इंसान, एक आदमी जब तक उनके साथ एक स्त्री शक्ति की सही शक्ति नहीं रहेगी, ये केडी शेट्टी आगे नहीं बढ़ सकता था। वो नन अदर देन श्रीमती सरिता शेट्टी जी। वैसे ही अभी आप लोग को सबको पता है, मैं तो अभी भले भवानी फाउंडेशन रहो या भवानी ग्रुप रहो, मैं बैक ऑफ द स्टेज, पर्दे के पीछे हूँ। असली पर्दे के सामने हैं हमारे दीक्षित शेट्टी जी। सही कहने जाए, आज अगर इंग्लिश में कहना है, आई एम अ प्राउड फादर। द रीज़न बिहाइंड, गॉड इज सो काइंड। आज मुझे जैसे मेरे 2 आँख है, वैसे 2 बच्चे को मुझे दिए हैं, दीक्षित और शिखा। आप लोग देख रहे हैं, आखिर में एक माँ पिताजी को क्या चाहिए? अपने बच्चों के जो उनका कौशल्य था। तो भगवान की कृपा से दोनों भी अच्छे दिशा में वो लोग जा रहे हैं, और पूरे जो मेरे पास जितना है वो उससे बेहतर करके दोनों भी साथ में ले चल रहा है। सो मैं वो लोग को भी यहाँ अब याद करना चाहता हूँ। उसके साथ साथ दीक्षित के लिए फिर से एक नारी शक्ति प्रियंका। जहाँ दूध जावे वहाँ शक्कर जाना चाहिए। जहाँ दूध जावे, अगर वहाँ सॉल्ट, नमक गया तो खत्म। तो मैं इतना ही कहना चाहूँ, हमारे जो जिंदगी में आपल्या आयुष्यात काहीतरी चांगलं कर्म करा, चुकून काहीतरी झालं, नेक्स्ट डे, दुसरी दिवस जाऊन आपण माप मागू, त्याच्यात काही कमी नाही होते।
So, here I would like to quote Miss Priyanka, who is really supporting Jikshit wholeheartedly. Now, आता तुम्ही इथे बघतात किती मीडियावाले आहेत बघा, किती मीडियावाले. ही आपल्या आई भवानीने आम्हाला दिलेला एक आशीर्वाद. काय बोलून नाही आलेलं आहे, फक्त नवीन आणि आपल्या दिनेश शेट्टी साहेबांच्या एक कॉलमुळे आज नाही म्हटलं तरी सुद्धा 10 एक व्हिडिओ मीडियावाले. हे कशासाठी पाहिजे? आम्हाला काय प्रचार नको, प्रचार हवी कशासाठी ते पण मी बोलायला इच्छितो. पुढे जाऊन आम्हाला फक्त वर्षात 2 रक्तदान शिबिर नाही आहे, फक्त 2 कार्यक्रम नाही आहे. आम्हाला काहीतरी शिक्षणासाठी करायचं आहे, आम्हाला काहीतरी आपल्या वैद्यकीयसाठी करायचं आहे. तर ते करायचं असेल आम्हाला नक्की गव्हर्मेंट सरकाराच्या पण आम्हाला मदत हवी. तर सरकारला आम्ही जे काय करतोय ते पोचवणार कोण आहे? आपल्या मीडियावाले. तर मी ह्यावेळ आपल्या मीडियावाल्यांना पण इथे मी आठवण करायला इच्छित आहोत. उसके साथ साथ आज बहुत सारे लोग हमारे दूतुम के सरपंच आ चुके हैं पूरे अपने टीम के साथ. हमारे अंबरनाथ से यस निजलिंगप्पा स्कूल के सारे कमिटी और शिक्षक वृंद और बहुत सारे शायद एक्स स्टूडेंट्स यहाँ आए हैं रक्तदान करने के लिए. आप लोग को भी मैं इस वक्त पे मैं याद करना चाहता हूँ. अभी शिखा ने सब कुछ बताया, उसे भी हमारे कृतिका घरत इतना अच्छा प्रास्ताविक सब कुछ कवर कर लिया. तो फिर से मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है. आज साल में 2 बार हम ये ब्लड डोनेशन कर रहे हैं और आप लोग ने ये भी में देखे संदीप उदाने. यस, इसका मूल कारण संदीप उदाने ही है. आज नहीं कहा तो भी गलत है, कहने से कोई गलत नहीं है. साल भर इस भवानी फाउंडेशन कम से कम 4 करोड़ रुपए भवानी ग्रुप और भवानी फाउंडेशन हमारे समाज के लिए हम दे रहे हैं. ये क्यों दे रहा है, क्या ज़रूरत है? अभी सब लोग केडी शेट्टी कह रहे हैं. मैं यही कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं है, ये माता भवानी. क्यों? वो माता भवानी ने ये जो गरीब बच्चा जब भी शिक्षण से वंचित हुआ था, वो गरीब माता ने मुझे यहाँ इस पावन धरती पर, इस महाराष्ट्र के इस धरती पर जैसे मैं पैर रखा, मुझे यहाँ रुकने की इजाज़त दी. उतना ही नहीं, जैसे मैं शिक्षण से वंचित हुआ था, सही में मैं शिक्षण से वंचित हुआ था. 8 साल के लिए मैं शिक्षण छोड़ के मैं बहुत अच्छा एक खेती, इंग्लिश में फार्मर कहते हैं, बट जैसे बॉम्बे में मैं आया, 8 दिन के लिए आया और मम्मी को खत लिखा और वो ग्रेट लेडी ने मुझे इजाज़त दिया, बेटे तू रह जा. और वो माँ ने जो मेरा सर्टिफिकेट्स स्कूल में पढ़ा था, वो सर्टिफिकेट तक निकाल के वो माँ ने मुझे यहाँ भेजा. और अपना भण संघ बॉम्बे, वो भी एक ट्रस्ट है. हमारे पूर्वजों ने 1927 में फॉर्म किया एक ट्रस्ट भवानी, अपना भण संघ बॉम्बे. वो भण संघ बॉम्बे ने 2 नाइट स्कूल उस टाइम पे, उस जमाना में किए थे. वो नाइट स्कूल में मुझे फिर से मेरा लाइफ मुझे मिला. सो जस्ट इमेजिन what does it mean education. So I have continued my education through that night school. So आत्ता मला कळला
शिक्षण म्हटलं की काय. आणि जेव्हा मी 13 वर्षाचे होता, माझ्या बाबा आम्हाला सर्वांना सोडून इस प्रपंचामधनं निघून गेले. का गेले, कसे गेले? आपल्याकडे औषधासाठी ते ताकद नव्हती. तेव्हा आता मला कल्पना आलं, कोणाला पण काय घटलं, हॉस्पिटल हवी. हॉस्पिटलला गेल्यानंतर पैसे हवी. फक्त पैसेमध्ये आपलं काय नाही होणार, रक्त हवी. ते उदाहरण आपल्या संदीप उधानेच्या तर्फे मला भेटलं सारखं. तर शिक्षण मी स्वतः, वैद्यकीय आपल्या संदीप, विधवा माझ्या आई, 19 वर्ष, फक्त 19 वर्ष माझ्या बरोबर राहिलेला आई. माझ्या बाबा सोडून गेले. त्याच्या काय कल्पना, त्याच्या फक्त बघितलेला मी स्वतः. अगर देखा होगा तो मैं खुद. आज वैसे कोई भी विधवा होवे, उनको कोई तकलीफ ना होवे, पूरे प्रपंच को तो हम नहीं देख सकते. हमारे घर के बगल में जो घर है, अगर हमारे घर पे 2 वक्त के खाना पक रहा है, तो हम इतना तो देखें वो घर पे एटलीस्ट 1 वक्त का खाना पक रहा है. तो वैसे आज विधवा का परिस्थिति मैं जानने के बाद आज मैं हक से बोल रहा हूँ, करीब 42 विधवाओं को हर महीना आज 7 साल से 5,000 रुपये जा रहा है. ये मेरी कल्पना थी, क्योंकि मैंने खुद ये दे के आया हूँ. सो ये जो भी है सर, ये कोई नाम के लिए नहीं है. और ये साथ इतने करते इनका दुआ जो मिला, आज नवीन यहाँ बैठा है. आपको सबको पता है, ये बच्चा मेरे साथ हाथ को हाथ देके, कंधे को कंधा देके मेरे साथ जुड़ा जब ही मैं ये कंपनी को फॉर्म किया. और जो भी दिक्कत हुई, कभी भी मुझे छोड़ा नहीं. आज आप लोग को सबको पता है, तुम्ही सगळ्यांना माहिती आहे वेअर वी आर स्टँडिंग ॲज ऑन डेट. आता तुम्ही सगळ्यांना मी सांगतो, आफ्रिका, साऊथ आफ्रिका, केपटाऊन. परवा मी राजी मॅडमशी माझ्या बोलण्यात आलेला. राजी मॅडम म्हणत होती, सर हम थोड़ा सा कपड़ा सब जमा करेंगे सर, बहुत सारा कपड़ा है, और ऐसे जगह पे जाके हम लोग उसको वितरण करेंगे. तभी मैं बोला, राजी, इंडिया में इतना बुरी हालत नहीं है जो अफ्रीका में है. परसों मेरे मुंह से निकल गया, हम एक 20 फीट नहीं तो एक 40 फीट कंटेनर भर के यहाँ से अफ्रीका तक जाके हम वहाँ भी इस भवानी फाउंडेशन के माध्यम से अभी वहाँ भी हम कुछ करेंगे. क्यों? आज हमारे हिंदुस्तान, हमारे माता भारत इतनी कोई कमजोर नहीं है. अगर असली में देखने जाए, बहुत सारा देश बहुत पीछे है. भगवान की कृपा से हम बहुत आगे चल रहे हैं. ये कैसे चल रहा है? ये सिर्फ एक पंतप्रधान मोदी जी कुछ नहीं कर सकते, एक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस साहब कुछ नहीं कर सकते, जब तक हम सब मिल के 2 हाथ जब तक साथ में नहीं आ रहे, ताली नहीं बजने वाला है. तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, दिल से आप लोग जब भी हमारे भवानी ग्रुप हो, कहाँ भी काम कर रहे हो, आप मुझे देखिए. 31 साल मैं भी सर्विस कर चुका हूँ. 5 रुपये नौकरी से मैं इस इंडस्ट्री से मैं आया हूँ, मगर जब भी किया, दिल से काम किया. दैट्स व्हाट कॉल्ड टेक एन ओनरशिप. ओनरशिप लेके काम करो. मालिक कौन है? हम खुद मालिक है. ये सोच के काम करो. मैं वो सोच के काम किया, इसके लिए आज इतने आप लोगों को मैं इकट्ठा कर सका. सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, आज हमारे ये 13वां ब्लड डोनेशन कैंप है, साल में 2 कर रहे हैं. और इस मौके पे मैं ये बताना चाहता हूँ, आता पुढच्या आपल्या ब्लड डोनेशन, आपल्या रक्तदान शिबिर आई भवानी आम्हाला सोडून
इकडनं गेली परमात्माच्या ते पाया खाली त्या दिवस 17 जनवरी सो फिक्स हमारे एक ब्लड डोनेशन कैंप रहेगा एवरी ईयर ऑन 17th of January, then followed by June, so every year too. So आज इतना अच्छा इस प्रोग्राम को सजाए है आप लोगों ने. मैं फिर से शिखा एज अ सेक्रेटरी, राजी एज अ जॉइंट सेक्रेटरी, HR से हमारे कृतिका, कृष्णाली और हमारे एंटायर टीम इन द सेंस पर्टिकुलरली हमारे विनोद एंड टीम, तो सब लोग ने मिलके इतना अच्छा आप लोगों ने इसको सजाया है. और आज मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कम से कम एक 200 यूनिट ब्लड हम MGM हॉस्पिटल को देवे. और दूसरी बात, इस वक्त पे अगर मैं MGM का नाम नहीं लिया, हर बार मुझे NMMC से कॉल आया, टाटा मेमोरियल से कॉल आया, बट MGM को इतना चाहते हैं हमारे लोग, रात को 12 बजे कॉल करो, ब्लड खुद वो लोग पहुँचा रहा है. तो इतना अच्छा सर्विस हमें MGM भी दे रहा है. तो ये सारा चीज़ को लेते हुए और हमारे जो मराठीमध्ये बोलायचं असेल आपल्या एकत्रता, हमारे यूनिटी हमेशा वैसे ही रहे और हम सब मिलके हमारे भवानी ग्रुप, भवानी फाउंडेशन को नेक्स्ट स्टेप में ले चले. और लास्ट बट नॉट लीस्ट, only my humble request to all the trustees and members, at least please come together, please let us work together. Only Raji, Shika, Jikshit can't do anything or Naveen can't do anything unless and until we are joining together. This is what my message. So मैं इतने बोलते हम और भी जो भी लोग अगर शिक्षण से वंचित हो रहे, अभी लास्ट वीक हमारे एक एम्प्लॉय रमेश करके हमारे एक इलेक्ट्रिशियन, उनके बेटे 3 साल के बेटे बच्चा एकदम सीवियर हो गया, बुखार सर पे चढ़ गया, बेचारे उड़ान से लेके DY में लेके आए. जैसा मुझे पता चला मैं इमीडिएटली DY में बातचीत करके डॉक्टर अपना सत्या जी के बेटी यहाँ बैठी है संध्या, वो भी डॉक्टर है, मैं सीधा सत्या जी को कॉल किया, सत्या आप जरा प्लीज़ DY चला जाओ संध्या को लेके. और संध्या खुद जाके रात को 9 बजे जाके वो बच्चे के साथ रह के पूरा डॉक्टर से रह के इवन DY का डीन डॉक्टर जोसेफ तक वहाँ पहुँच गए. ये है हमारी भवानी फाउंडेशन की और भवानी शिपिंग की ये ताकत है. तो फिर से मैं ज़्यादा ना वक्त लेते हुए, आप लोग बहुत अच्छे तरह से यहाँ इकट्ठा हुए हैं. फिर से एक बार डॉक्टर जवाहर साहब बहुत टाइम आपने दिए हैं. उमा मैडम आपको भी, अच्छा उमा मैडम स्त्री शक्ति, आज हमारे जो जिस सोसाइटी में मैं भी रहता हूँ, आज नवी मुंबई में अगर एक 10 एकड़ में एक सोसाइटी बना है, 614 फ्लैट्स है, 93 शॉप्स है, इन द सेंस अराउंड 800 मेंबर्स. इतना बड़ा सोसाइटी, इतना पॉपुलर सोसाइटी. इवन गणेश नाइक साहब आए थे इसी कार्यक्रम में लास्ट टाइम. हम गणेश नाइक साहब को भी हमने रिक्वेस्ट किए थे. हमें 13 साल से हमें वो सी नहीं मिला, 13 साल से वो सी नहीं मिला. इवन मैं भी पार्ट ऑफ द MC था, बहुत कोशिश किया, आपको पता है, मैं बताना चाहता हूँ, कुछ नहीं हुआ. पूरा इतना स्ट्रांग फाउंडेशन डाल दिया बट बिल्डिंग ऊपर नहीं बढ़ रहा है. ये मैडम, हम इलेक्शन में मैं भी खड़ा था, हमारे पैनल हार गई, मैडम के पैनल जीत गई, बट जैसा मैडम के पैनल जीत गई वो कभी हमें छोड़ के नहीं बैठी. और हम सब, भले मैं हार गया, आज देखिए मैडम को मैं क्यों बुलाया इधर. आज मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर नवी मुंबई में एक ऐसी सोसाइटी है,
101 करोड़ 101 कोटी देके एक पैसा एक महीने में जमा करके सिडको और एनएमएमसी से अगर सी लिया है, दैट इज द लीडरशिप ऑफ मैडम उमा। तो मैं ऑफिस में बैठे बैठे मैं उनको कहा, जैसा भी बोल रहे हैं ना, केडी शेट्टी नहीं, केडी शेट्टी जब भी मम्मी के पेट से जमीन में गिरा वो वक्त अच्छा था, वैसे ही मैडम उमा ने जैसा वो टेक ओवर लिया, हरीश सिंगवड़े के जैसे आदमी, सत्य बाबू के जैसे आदमी, यू एंड मैं, हम सब मिलके, हम कोई दुश्मनी नहीं रखा, हम प्यार लेके चले। आज वो प्यार का नतीजा क्या है? आज 13 साल से जो हम सड़ रहे थे वो सी अभी परसों 18 को वो सी हाथ में मिला, 19 को अपना युगादि के दिन हम मनाए। सो आज क्या नसीब है। तो वैसे उमा मैडम यहाँ आई है। तो एनी हाउ एक से एक अच्छे अच्छे अतिथि हमारे सामने आज आए हैं। और आप लोग कोई कहाँ, राजी ने कहा, अरे सर कहाँ से इतने ऐसे लोगों को चुन रहा है? ये मैं नहीं चुन रहा हूँ, ये भगवान ने चुना के दे रहा है। तो आगे भी चल के लेट अस वर्क एज अ फैमिली एंड लेट अस टेक आवर भवानी ग्रुप इनटू नेक्स्ट लेवल। और एक खुशी की खबर आप सबको ये है, भवानी ग्रुप और एक कंपनी फॉर्म करके, फ्रेंच शिपिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करके और एक कंपनी को, एजेंसी कंपनी को लेके हमारे प्लीज़ खड़ा रहिएगा, अपने अविनाश गोले जी के नेतृत्व में हमारे दीपाली मैडम, दीपाली ओके, इनके माध्यम से पूरे इंडिया, दुबई, मलेशिया, सिंगापुर और दिल्ली ऑलरेडी कांडला वगैरह स्थापन हो गया। तो आप लोग को मैं ये क्यों बताना चाहता हूँ कि इन द सेंस let us work as a team, let us maintain our unity. Thank you so much, thank you so much, thank you so much. मेरे से एक नाम छूट गया है। आज शिका अगर इतनी कर रही है कंपनी के लिए, फाउंडेशन के लिए, शिका अभी रहती है गोरेगांव, ऑफिस है नवी मुंबई, ट्रैवलिंग अगर समझो गाड़ी में आना है तो 2.5 से 3 घंटा, मगर ट्रेन में आती है, ट्रेन से जाती है। ये इतना सहकार, जैसे अगर मुझे सरिता ने सपोर्ट किया तो वैसे ही अदर वे अराउंड शिखा ने अभिषेक को सपोर्ट किया, अभिषेक शिखा को सपोर्ट कर रहा है। सो माय सन इन लॉ अभिषेक इज हियर। अभिषेक, thank you so much for having a son-in-law like you. Once again, I would like to thank you, Abhishek. Thank you so much. Thank you, sir. Actually, as a leader, the way you guide, be it Bhavani Group or be it the foundation, without your guidance, this status what we are today is definitely not possible, sir. Thank you. May your legacy continue to inspire us all towards greater acts of compassion and humanity. Thank you. Now, we are deeply honored by the gracious presence of our well-wishers from the community who have always stood by our foundation with steadfast support. Their blessings add immense value to this event. I would now like to call Mr. Mohan Rai Karnuru to extend a heartfelt welcome to all of them. गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के अपना ये कार्यक्रम में बहुत सारा ये नवी मुंबई परिसर का अलग अलग संघ संस्था का पदाधिकारी लोग हैं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग यहाँ आकर अपना गौरव लेने के लिए। डॉक्टर सत्य बाबू की बेटी डॉक्टर संध्या जी है यहाँ पर, आप प्लीज़ आ जाइए, अपना गौरव लीजिए। बणसंगा
मुंबई का सिटी रीजन का चेयरमैन अशोक पकड़ जी है अपने साथ, प्लीज़ आप आ जाइए। नवी मुंबई बनसंगा नवी मुंबई रीजन के लेडीज विंग के चेयरपर्सन श्रीमती गीता शेट्टी यहाँ पर है, आप आ जाइए मैडम। भवानी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कैप्टन कपूर जी, प्लीज़ आप आके अपना गौरव लीजिए। कैप्टन कपूर, अपना प्रेसिडेंट सर ने ऑलरेडी बताया था, हमने भवानी फाउंडेशन ने 4 स्कूल को अडॉप्ट लिया है। 3 स्कूल कालापुर फिरकटवाड़ी करजत एरिया में, 1 स्कूल अंबरनाथ में, निजलिंगप्पा कन्नड़ा स्कूल, इसकी कन्नड़ा वैभव संस्था का प्रेसिडेंट यहाँ पर है तिलक चिलवादी सर, आप यहाँ जाइए। ऐसे DA कड़ोले हनुमंत जकलवादी, हेड टीचर हनीता राजाली मैडम, आप भी आ जाइए। बसवंत पुजारी, आप भी आइए। पगौटा विलेज के सरपंच जी है, ओके। नमो मोयर ग्लोबल फाउंडेशन के राधेश उचिल, यशवंत आइल, आप लोग भी आ जाइए। जो भी मीडिया वाला ने अपना ये प्रोग्राम को बहुत सपोर्ट किया, कन्नड़ा ऐसे हिंदी मराठी मीडियम के अपना कर्नाटक मल्ला नवीन इन्ना जी आ जाइए। ऐसे ही उदयवाणी का सुभाष शिरिया, शांभवी चैनल का करुणाकर शेट्टी, आवाज टुडे का पुरुषोत्तम जी, EW नेटवर्क के गंगा सिंह राजपुरोहित जी, नवी मुंबई नेटवर्क का साहिल मोरे, प्लीज़ आप लोग आ जाइए। महाराष्ट्र न्यूज़ का साहिल, ट्वेंटी4 तास का प्रणीत जी, श्री गणपति दुर्गादेवी अय्यप्पा मंदिर के सेक्रेटरी सिंगर मोहनदास राय जी यहाँ पर है, मोहनदास राय प्लीज सर। पूरा टीम अय्यप्पा दुर्गा देवी श्री गणपति दुर्गा देवी अय्यप्पा मंदिर के सारा टीम। Thank you. Hello. Thank you. जयमल और कैटरर्स जो आज के हमारे लंच के लिए जो सपोर्ट किए हैं,
उनके तरफ से मैं उनके टीम को बुलाती हूँ. Mr. Ashutosh, can you please come over here on behalf of Jai Mallar Caterers, please? Mr. Ashutosh Patil. We have come to the stage to thank all in making this event a grand success. I would request Ms. Krishnali to come over here and share the vote of thanks to the gathering. Good morning, everyone. On behalf of Bhavani Foundation, I would like to extend my heartfelt gratitude to all those who are part of this camp, the blood donation camp. A special thanks to our president, committee, and all the trustees and the guest of occasion. I would also like to express my sincere thanks to our event partner, Mr. Alex and his team. Also, our media partners, well-wishers, V Times Squares, who has led us this space to conduct this event. Also, I would like to thank Mr. Jai Mallar, as Rajvi ma'am said, for this amazing food, delicious food. A heartfelt thanks to medical team of MGM Hospital for their professional support and care throughout this camp. A special thanks to Bhavani Group and all the donors, because without them, this camp won't be a success. A special thanks to, I would like to say, to our management team and organization team for their support and coordination. Your kindness and willingness to support this camp and give back to society is truly inspiring. Thank you once again for your contribution to this noble cause. Thank you all. Thank you so much.